Let us see the next question. State of economy, in that स्टेट ऑफ इकोनॉमी दे रखा है हमको ए बी सी, यानी तीन में से एक स्टेट ऑफ इकोनॉमी होगा। हर एक का प्रोबेबिलिटी दे रखा है हमको, हर एक का रिटर्न दे रखा है हर एक सिचुएशन में, यानी सिक्योरिटी एक्स का रिटर्न हर एक सिचुएशन में और वाई का रिटर्न हर एक सिचुएशन में हमको दे रखा। फॉलोइंग आर थ्री इन्वेस्टर्स हु वांट टू इन्वेस्ट एज फॉलोज। तो तीन इन्वेस्टर्स है, उनको कुछ इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है। एन इन्वेस्टर कॉल मिस्टर तेंदुलकर हु वांट्स टू इन्वेस्ट ओनली इन सिक्योरिटी एक्स। मिसेस तेंदुलकर, शी वांट्स टू इन्वेस्ट ओनली इन वाई। मास्टर तेंदुलकर, he wants to invest 50% in X and 50% in Y. You are required to answer following simple questions. Three questions are there. Return and risk for Mr. Tendulkar, Mrs. Tendulkar and for Master Tendulkar using, highlight the portion, Markowitz model. Markowitz model से risk find करना, उसका मतलब क्या होता है? Simple. You are required to make the calculation of the risk measured in form of standard deviation. हम लोग उसको आगे डिटेल में समझने वाले हैं। तो हमको यहाँ पे रिटर्न यानी कि मीन वैल्यू फाइंड करना है और रिस्क यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है फॉर मिस्टर तेंदुलकर। सो लेट अस मेक कैलकुलेशन फॉर मिस्टर तेंदुलकर। मिस्टर तेंदुलकर ने सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी एक्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तो क्या होगा, हम लोग सिक्योरिटी एक्स का रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, सिक्योरिटी एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। दैट इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू गिव आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। चलो राइट डाउन आंसर। कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न एंड रिस्क for Mr. Tendulkar in that write down Mr. Tendulkar has invested in only one security. So, return and risk of security X would be return and risk of Mr. Tendulkar's portfolio. So कॉलम नंबर 1 होगा प्रोबेबिलिटी, कॉलम नंबर 2 होगा सिक्योरिटी एक्स का रिटर्न, प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स, उसके ऊपर से मीन वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद एक्स माइनस एक्स बार, फिर आखिरी में एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी और उसका समेशन। जो भी उसका समेशन होगा दैट इज द वेरिएंस, और फिर उसका अंडर रूट करके हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। सो कॉलम नंबर 1 प्रोबेबिलिटी, उसमें हम लोग लिख सकते हैं 0.4, 0.2 एंड 0.4। रिटर्न के कॉलम में 18, 9 नेगेटिव एंड 12 पॉजिटिव। 0.4 into 18 is 7.2. 0.2 into -9
is 1.8 negative, 0.4 into 12 is 4.8 positive. That is the way we are required to compute. So it is 7.2 minus 1.8 plus 4.8. तो मीन रिटर्न आता है 10.2%, यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न आता है 10.2%. उसके बाद क्या किया जाएगा, x माइनस एक्स बार. सो इट इज 18 माइनस 10.2, that is 7.8, minus 9 minus 10.2 is minus 19.2, 12 minus 10.2 that comes to 1.8. That is the way we compute x minus x bar. फिर x minus x bar का स्क्वायर 7.8 का स्क्वायर इंटू 0.4, 19.2 का स्क्वायर इंटू 0.2, 1.8 का स्क्वायर इंटू 0.4. सो 7.8 into 7.8 into 0.4, that is 24.336. Then square of 19.2 into 0.20, 73.728. Square of 1.8 into 0.4, that is 1.296. So 24.336 plus 73.728 plus 1.296, that comes to 99.36. that is the variance. और फिर उसका अंडर रूट करके हमको मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन. ये मिस्टर तेंदुलकर के लिए, दैट इज से फॉर सिक्योरिटी एक्स के लिए पूरा का पूरा वर्किंग हो रहा है. स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट ऑफ द वेरिएंस. सो अंडर रूट ऑफ 99.36. सो 99.36 उसका रूट किया जाएगा 9.9679. That is the way the standard deviation will be calculated. Now the second part of the question, in that we are required to find the return and risk for Mrs. Tendulkar. Now Mrs. Tendulkar ने सिर्फ और सिर्फ वाई सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया है. So return answer, calculation of return and risk for Mrs. Tendulkar. In that, again column number 1 is the probability, column number 2 is return of the security y, probability into y, y minus y bar का स्क्वायर और उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा. सो वी अंडरस्टैंड इट्स इट इज 424. अगेन सिक्योरिटी वाई का रिटर्न है 10, 11 और -9. सो इट इज 4, 2.2 and 3.6 negative, that is 10 into 0.4, 11 into 0.2 and -9 into 0.4. So based on this, we'll make the calculation of x bar. 4 plus 2.2 minus 3.6
that comes to 2.6%. उसके बाद y माइनस y बार किया जाएगा, that is 10 minus 2.6, that is 7.4, 11 minus 2.6, that is 8.4, minus 9 minus 2.6 is minus 11.60. That is the way y minus y bar. Finally y minus y bar का स्क्वायर और उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. So 7.4 square into 0.40. 21.904. 8.4 square into 0.20. 14.112. Negative 11.6 square into 0.40. 53.824. So 21.904 plus 14.112 plus 53.824, it is 89.84. So dear students, this is a variance for security Y. So we can compute the standard deviation. This is Y bar. Standard deviation is under root of the variance. So it is under root of 89.84. That is the way the standard deviation can be calculated. It is 9.8434. .4784. That is the way the standard deviation can be calculated. The third question is that the return and risk for Master Tendulkar using Markowitz model, that is a question. Now basically क्या होगा यहाँ पे friends, हम लोग कुछ ऐसा working कर सकते हैं. Listen carefully. That simply we can do working like this. I request you to write down heading. मैं आपको समझाता हूँ. Calculation of return and risk for Master Tendulkar. उस पे लिखो Master Tendulkar has made investment in more than one security. Full stop. So we can compute return and risk as under. यानी उन्होंने क्या किया, एक से ज़्यादा सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस केस में we will have the standard deviation and the risk and return to be calculated like this.
मेथड नंबर 1, उसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉलम नंबर 1 विल बी प्रोबेबिलिटी, कॉलम नंबर 2 विल बी रिटर्न, जिसको हम लोग z वेरिएबल असाइन करेंगे। z का कैलकुलेशन कैसे होगा, वेट ऑफ x इंटू रिटर्न ऑफ x प्लस वेट ऑफ y इंटू रिटर्न ऑफ y, ऐसा होगा। ये देखो यहाँ पे हम लोग ऐसा समझ सकते हैं 40%, 20%, 40%। वी आर हैविंग इन्वेस्टमेंट ऑफ 50% ऑफ द फंड्स इन सिक्योरिटी x, जिसका रिटर्न है 18%, एंड 50% ऑफ द फंड्स इज इन्वेस्टेड इन y, जिसका रिटर्न है 10%। So we understand that so the weighted average return would be 14%. 20% chances क्या होगा कि जो हमारा पहला 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट है उसमें -9% का रिटर्न होगा, और दूसरा 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट है उसमें +11% का रिटर्न होगा। सो ओवरऑल व्हाट विल हैपन, ओवरऑल रिटर्न वुड बी 1%। आखिरी के 40% चांस में 0.5 इंटू 12 प्लस अनदर 0.5 इंटू -9, दैट इज द वे वी विल हैव द रिटर्न। सो क्या होगा, इट इज 6 minus 4.5, so the weighted average return would be 1.5%. That is the way so we'll get the return. Now question becomes very simple dear students, हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इंटू z, उसका जो मीन वैल्यू आएगा ना उसको हम लोग z बार बोलेंगे। उसके बाद क्या होगा, z माइनस z बार होगा। उसके बाद क्या होगा, z माइनस z बार का स्क्वायर, उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। उसका जो समेशन होगा दैट इज द वेरिएंस, और फिर उसका अंडर रूट करेंगे, और उसका जो अंडर रूट होगा ना फ्रेंड्स, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो हेल्ड बाय मास्टर तेंदुलकर। So starting further, it is there are 40% chances that the return will be 14%. That comes to 5.6. 20% chances return would be 1%. 40% chances return will be 1.5%. So 5.6 plus 0.2 plus 0.6, that comes to 6.4, that is z bar. Okay, once you make the calculation of the mean return, afterwards you will make the calculation of z minus z bar. So it is 14 minus 6.4, that comes to 7.6. Then 1 minus 6.4, that is negative 5.4. Then 1.5 minus 6.4, that is negative 4.9. That is the way z minus z bar will be calculated. Then probability into z minus z bar whole square, that is 7.6 का स्क्वायर करेंगे, उसको प्रोबेबिलिटी 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव 5.4 को का स्क्वायर करेंगे इंटू 0.2 करेंगे, नेगेटिव 4.9 का स्क्वायर करेंगे इंटू 0.4 करेंगे। दैट इज द वे विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ z माइनस z बार होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। So the answer is, in the first case 23.104, then square of 5.4 into 0.2, so 5.832, square of 4.9 into 0.4, 9.604. That is the way variance of the portfolio will be calculated. 23.104 plus 5.832
plus 9.604, that is 38.54. This is the way we are required to make the calculation of the variance of the portfolio. Once you make the calculation of the variance of the portfolio, उसका रूट करके हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं. और देखो रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली आ गया है 6.4%. So we can say that the standard deviation of the portfolio is under root of the variance of the portfolio. So it is under root of 38.54. That is the way we make the calculation of answer. So under root of 38.54, $6.2081. That is the way standard deviation of the portfolio can be calculated. This is the first very simple method by which you can do answer. Chalo, let us see. This is the way the risk of the portfolio is calculated by the simple method. Now write down heading alternatively method number 2. Learning method number 2 is very important. Why? Because many a times क्वेश्चन में हमको सिर्फ ऐसा ही इंफॉर्मेशन दिया जाएगा जिससे सिर्फ हम लोग सेकेंड मेथड ही यूज कर सकते हैं, हम लोग फर्स्ट मेथड यूज कर सकते नहीं हैं. सो लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग दैट से मेथड नंबर 2 में आंसर कैसे किया जाएगा. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन. कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो. देखो हमको पता है कि एक से ज़्यादा सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया है, देन इन दैट केस रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो के लिए आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, एग्जैक्टली द वे यू आर डूइंग योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपको कुछ वैसा ही यहाँ पे भी आपको करना है. यू हैव टू सी दैट व्हाट इज द प्रपोर्शन इन विच यू आर मेड इन्वेस्टमेंट एंड यू हैव टू सी दैट से व्हाट इज द मीन रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी. यानी देखो we understand column number 1 is security, column number 2 is weight or proportion in which the investment is made, column number 3 is the return, और आखिरी कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, weight into return. ऐसा करके हमको रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है. हमने दो सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया है एक्स एंड वाई. कौन से प्रपोर्शन में, इक्वल प्रपोर्शन में. यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो क्या होगा 2,50,000 एक्स में और 2,50,000 वाई में. फॉर एग्जांपल हमने 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो 25 लाख एक्स में और 25 लाख वाई में, ऐसा हम लोग समझते हैं ना. एक्स का रिटर्न क्या है वो हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है फ्रेंड्स. एक्स का रिटर्न है 10.2% और वाई का रिटर्न है 2.6%. ऐसा करके हमने दोनों रिटर्न्स कैलकुलेट करके रखे. दिस इज 10.2 and this is 2.6. Taking into account the proportion in which we have made investment and the return of the individual security, हम लोग रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो का कैलकुलेशन करेंगे. सो 50% ऑफ द फंड्स is going to earn a return of 10.2% and another 50% of the funds will earn at the rate of 2.6%. So this is 5.1 and this is 1.3. Overall return of the portfolio will be 6.4%. ऐसा करके हम लोग रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो का कैलकुलेशन कर सकते हैं. प्लीज टेक डाउन आंसर. चलो read on with paragraph. Whenever investment is made in more than one security comma return of portfolio
can be calculated as simple weighted average. उसी में लिखो taking into account proportion in which investment is made and return of individual security. Full stop. Now heading right down, calculation of risk of portfolio, using Markowitz model. Now friends, first of all I tell you that how to make the calculation of the answer. We will do it gradually, a few workings, and then we will have understanding that say which formula is supposed to be applied. And for that, so I am telling you that say right now first of all we will be doing calculation of correlation coefficient between returns of security X and security Y. Why do we do it? I just explained that to you in 2 minutes of time. In simple words, we are going to calculate the R. Now, what do we understand with the term R? I give you explanation by taking a few examples. For example, let us say that we want to measure the correlation coefficient between selling price per unit and let us say NPV of a project. Let us say there is an investment proposal in which we are going to manufacture and sell a product. We want to know that say what is the kind of relationship that say the NPV of the project has with the selling price per unit. Then the answer would be positive relationship. Why? Because with the increase in the selling price per unit, what will happen? Revenue increases, and because of that the cash flows will increase and NPV is going to increase. Now, what kind of relationship is there between, let us say that the cost of capital of the company and NPV of the project? Then we understand that say both of them are having inverse relationship. With the increase in the cost of capital, NPV will fall down, and with the decrease in the cost of capital, NPV will go up. That is the way say they are having say the negative relationship. This is the way say we can have the measurement of the relationship say between two variables. We can have the relationship to be measured like say between the two variables, and there are number of examples. Like for example, the quantity of the raw material for which you place order and total ordering cost. We understand that say when you increase the quantity for which you place order, then in that case the number of orders will fall down. So the total ordering cost is also going to fall down. So this is the positive relationship, this is the negative relationship, this is again the negative relationship. As far as the R is concerned, we know that so the range of R is -1 to +1.
Why do we compute R? I'll explain that to you slightly later on. Right now I am giving you explanation that we are going to make the calculation of the R, and for that, say I am just trying to revise the correlation coefficient, a word that say you might have come across in statistics. As far as the correlation coefficient is concerned, it is calculated by using a very simple formula, covariance of the security, it is calculated as covariance between returns of the security X and returns of the security Y divided by standard deviation of X into standard deviation of Y. In a way that the correlation coefficient is calculated by using a formula as the covariance divided by the individual standard deviation. Now, as far as the covariance between X and Y is concerned, how you can calculate the same? Again, it depends upon what kind of information is given to us. There are two types of information that say may be provided to us. We may be provided with the past information, or we may be provided with the probability distribution method. If at all we have been provided with the sample data for the assessment, like the past data is provided to us, then in that case it is X minus X bar into Y minus Y bar divided by the number of observations. Total of the same divided by the number of observations. That is the way we make the computation of the covariance between X and Y, and if at all the probability distribution method is given, then in that case it is X minus X bar into Y minus Y bar multiplying with the probability and summation of the same. That is the way the covariance can be calculated between the returns of the two securities. ये जो हम लोग करेंगे उसके बाद R का जो आंसर आएगा ना, that R is indicating what sort of relationship that returns of these two securities have. सिक्योरिटी X का रिटर्न और सिक्योरिटी Y का रिटर्न, उन दोनों का आपस में कैसे कोरिलेशन है वो हमको R बताएगा. So of course in this example this will be applicable to us, this formula. Now this is the heading of the working note that we are going to do, and we understand that this is the formula which we are supposed to apply. Now ये फॉर्मूला में x माइनस एक्स बार हमारे पास ऑलरेडी है, y माइनस वाई बार हमारे पास ऑलरेडी है, प्रोबेबिलिटी हमको क्वेश्चन में दे रखा है. तो हम लोग एक छोटा सा टेबल बनाएंगे. टेबल में कैसे होगा फ्रेंड्स, वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेटिंग कोवेरियंस between returns of security X and security Y. ऐसा किया जाएगा. Column number 1 will be probability, column number 2 will be X minus X bar, column number 3 will be Y minus Y bar, आखिरी कॉलम में x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इंटू प्रोबेबिलिटी, और उसका जो समेशन होगा ना, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द कोवेरियंस. सो कॉलम नंबर 1 प्रोबेबिलिटी इज 0.4, 0.2, 0.4. Then x minus x bar, it is 7.8, then negative 19.2, sign of negative is important, and 1.8. So 7.8, negative 19.2 and positive 1.8. उसके बाद y माइनस वाई बार 7.4 पॉजिटिव,
8.4 positive and 11.6 negative. 7.4, 8.4 and 11.6. So we will have 0.4 into 7.8 into 7.4, 0.2 into negative 19.2 into 8.4, 0.4 into 1.8 into negative 11.6. That is the way covariance between returns of x and y will be calculated. So 7.8 into 7.4 into 0.4, that is 23.088. 0.2 into 19.2 into 8.4, 32.256. 0.4 into 1.8 into 11.6, 8.352. 23.088 minus 32.256 minus 8.352, that is negative 17.52, and this is the numerator, that is the covariance. उसके बेसिस से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट. It is covariance between returns of x and y divided by standard deviation of x into standard deviation of y. So it is negative 17.52 divided by standard deviation of x into standard deviation of y. So standard deviation of x is 9.9679 and standard deviation of y is 9.4784. So 9.9679 into 9.4784. Using this we can compute the correlation coefficient. So the final answer is negative 0.1854. That is the way the correlation coefficient can be calculated. Okay. Now going further, calculation of, that is write down working note number 2, calculation of variance of the portfolio. The first working note in method number 1 is, method number 2 is calculation of the correlation coefficient, और उसके बाद हम लोग वेरिएंस करेंगे. वेरिएंस का कैलकुलेशन कैसे होगा? रेडन आंसर डब्ल्यू एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वाई स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर इंटू डब्ल्यू एक्स सिग्मा एक्स प्लस डब्ल्यू वाई सिग्मा वाई. एक्स एक सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे टू कंप्यूट द वेरिएंस. पहले हम लोग वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो का कैलकुलेशन करते हैं यूजिंग दिस न्यू फार्मूला दैट वी हैव, और उसके बाद मैं उसका डेरिवेशन भी आपको समझा देता हूँ. फॉर्मूला कैसे वर्क करता है? डब्ल्यू एक्स स्क्वायर, डब्ल्यू एक्स कितना है? 0.50 रेज टू 2. डब्ल्यू वाई स्क्वायर वो कितना है? अगेन 0.5 रेज टू 2. multiplying with the variance of the x and variance of the y respectively. तो देखो ये x का वेरिएंस है 99.36 और y का वेरिएंस है 89.84.
So this is 99.36 and this is 89.84 plus 2 into R. R means correlation coefficient, that is negative 0.1854 into weight of X is 0.5 into weight of Y is again 0.5 into standard deviation of X. I'm sorry friends, this is multiplication sign, into standard deviation of X. Standard deviation of X is nothing else but it is root of the variance, that is root of 99.36 into root of variance, that is root of 89.84. ये सिंपल फॉर्मूला का डेरिवेशन भी हम लोग समझते हैं, डोंट वरी. स्क्वायर ऑफ 0.5 इज 0.25 into 99.36. Again square of 0.5 is 0.25 into 89.84 plus it is 2 into 0.1854 into 0.5 into 0.5, that comes to 0.0927 into root of 99.36 into root of 89.84. So 0.25 into 99.36, that comes to 24.84 plus 89.84 into 0.25 once again, that is 22.46 plus we'll do root of 99.36, that is 9.9679 then again root of 89.84, that is 9.4784 24.84 plus 22.46. And friends, this is minus, I'm sorry, this is minus because correlation coefficient is negative. So it will be (9.9679) into 9.4784 into 0.0927, that comes to 8.7583. That is the way we'll have the calculation. So 24.84 plus 22.46 minus 8.7583, that comes to 38.5417. That is the way we'll compute the variance. और एक बार वेरियंस हो जाएगा उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन करना बहुत ही आसान है. इट इज रूट ऑफ द वेरियंस. So it is root of 38.5417. So under root of 38.5417, that is 6.2082. That is the way the standard deviation of the project can be found. Now understanding the derivation of the formula, देखो सबसे पहले मैं रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो है ना, उसका फॉर्मूला का डेरिवेशन समझा देता हूँ. रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो का वर्किंग हमने कैसे किया फ्रेंड्स? इट इज वेट इनटू मीन रिटर्न, ऐसा किया हमने. दैट इज द वे वी हैव मेड द कैलकुलेशन ऑफ आंसर. सो बेसिकली हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, लिसन केयरफुली, दैट रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो
is weight of x into x bar plus weight of y into y bar. That is the way the return of the portfolio is calculated. So basically z bar is equal to, ये जो z bar है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 6.4%. ये जो z bar है ना, it is weight of x into x bar plus weight of y into y bar. ऐसा करके हम लोग यहाँ पे z bar का कैलकुलेशन कर सकते हैं. ओके, नाउ वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो, ये जो 38.54 है, उसके लिए हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो इज कैलकुलेटेड एज z माइनस z बार, उसका स्क्वायर, उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करो और उसका समेशन करो. चलो ठीक है. नाउ दैट इज द वे यू कैन हैव द वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो. Listen carefully. So variance of the portfolio is equal to z minus z bar. उसका स्क्वायर करो, उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करो और उसका समेशन करो. ना z का कैलकुलेशन कैसे होता है? z का कैलकुलेशन होता है वेट ऑफ x इंटू रिटर्न ऑफ x प्लस वेट ऑफ y इंटू रिटर्न ऑफ y. ऐसा करके हम लोग क्या करते हैं? z का कैलकुलेशन करते हैं. So value of the z is replaced like this: weight of x into return of x, weight of y into return of y. तो ये क्या हो गया? ये z हो गया. माइनस क्या किया जाएगा? z बार किया जाएगा. weight of x into x बार प्लस weight of y into y बार. तो ये क्या हुआ? z माइनस z बार, उसका स्क्वायर करो, उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करो, उसका समेशन करो. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. अच्छा, नाउ आई सिंप्लीफाई द इक्वेशन, जिसमें ये ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूं, ये ब्रैकेट. तो सी आई एम रीराइटिंग द इक्वेशन. वेट ऑफ एक्स इंटू रिटर्न ऑफ एक्स, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या है? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. प्लस वेट ऑफ y इंटू रिटर्न ऑफ y. अगेन ये क्या पॉजिटिव है, ये क्या नेगेटिव है, सो माइनस वेट ऑफ y इंटू y बार. ये जो भी आंसर है उसको क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे. उसको क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. अच्छा, ना हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स? ये वेट ऑफ x को कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे rx माइनस एक्स बार. अगेन हम लोग क्या करेंगे? वेट ऑफ y को कॉमन लेंगे, ry माइनस y बार होल रेज टू 2. उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका हम लोग समेशन कैलकुलेट करेंगे. अच्छा, नाउ नेक्स्ट लिसन केयरफुली. लेट अस से दैट दिस इज a एंड दिस इज b. तो क्या होगा? a प्लस b का स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. बस इतना ही सिंपल वर्किंग करना है. तो देखो मैं भी a स्क्वायर लिख रहा हूँ, ध्यान रखना फ्रेंड्स. wx स्क्वायर एंड rx माइनस एक्स बार स्क्वायर. तो ये a स्क्वायर हुआ प्लस b स्क्वायर कैसे किया जाएगा? wy स्क्वायर ry माइनस y बार स्क्वायर प्लस 2ab किया जाएगा. सो प्लस 2 इंटू ए बी कैसे किया जाएगा? वेट ऑफ x, वेट ऑफ y इंटू आर एक्स माइनस एक्स बार आर वाई माइनस वाई बार. तो ये ब्रैकेट मैंने ओपन किया और ये जो समेशन पी आई है फ्रेंड्स, वो क्या है? सबका कॉमन मल्टीप्लायर है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? समेशन प्रोबेबिलिटी, समेशन प्रोबेबिलिटी, समेशन प्रोबेबिलिटी, ऐसा हम लोग लिखेंगे.
Now listen carefully. This is wx square. This is rx minus x bar का square into probability और उसका summation. So that is what we understand is the variance of x. This is variance of x plus wy square. वापस क्या होगा, y माइनस वाई बार का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी और उसका समेशन, यानी क्या हुआ, वेरियंस ऑफ y प्लस 2 इंटू, देखो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कोवेरियंस आर एक्स माइनस एक्स बार इंटू आर वाई माइनस वाई बार, तो वो कोवेरियंस हो गया। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, 2 इंटू डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई इंटू कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा, now the formula is on the verge of completion of the derivation. देखो R का फॉर्मूला क्या है, it is a covariance of x and y divided by standard deviation of x into standard deviation of y. तो देखो covariance x and y को रिप्लेस किया जा सकता है R into standard deviation of x into standard deviation y. अच्छा, so I am rewriting the equation. ये है वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो, इट इज डब्ल्यू एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर डब्ल्यू वाई स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर 2 इंटू आर को हमने रिप्लेस किया कैसे, आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन वाई, आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, उसको मैंने स्प्लिट करके लिखा। यहाँ पे मैंने लिखा WX, यहाँ पे लिखा मैंने WY, तो वो याद रखने में थोड़ा आसानी रहेगा इस वजह से। दिस इज द वे सिंपली वी कंप्यूट द वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो। दिस इज द वे वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो कैन बी फाउंड। वेरिएंस इज नेवर आस्क्ड अपॉन एन एग्जामिनेशन, दैट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, बट बहुत ही इंपॉर्टेंटली यू नीड टू अंडरस्टैंड कैलकुलेशन ऑफ द वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो when investment is made in more than one security by using this equation. क्यों? Because many a times it will happen that you will be provided with such information that only this method can be applied for the purpose of calculation of the risk of the portfolio and not the first method information would be available. Let us have the final summary of the entire answer. Very lengthy question. इंफॉर्मेशन दे रखा है 3 इन्वेस्टर्स के बारे में। पहले 2 इन्वेस्टर ने सिर्फ एक सिक्योरिटी में ही इन्वेस्टमेंट किया है, और जो तीसरा इन्वेस्टर उन्होंने 2 सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया है। सिर्फ एक ही सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया है तो क्या होगा, वही सिक्योरिटी का रिटर्न और वही सिक्योरिटी का जो रिस्क है, दैट इज व्हाट वी हैव टू कंसीडर फॉर कैलकुलेशन ऑफ द रिस्क एंड रिटर्न। तो एक सिक्योरिटी में मीन रिटर्न और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन, वाई सिक्योरिटी में मीन रिटर्न और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन, तो वो तो बहुत ही आसान था। थर्ड क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, रिटर्न एंड रिस्क फॉर मास्टर तेंदुलकर, जिसने एक से ज़्यादा सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया। उसमें भी फर्स्ट मेथड तो बहुत ही आसान है, ऑलमोस्ट द सेम व्हाट वी ऑलरेडी डू इट, जिसमें हम लोग एक नया वेरिएबल बनाते हैं z, और z का रिटर्न कैलकुलेट करते हैं वेट ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी मल्टीप्लाइंग विद द रिस्पेक्टिव रिटर्न, उसका बाद वेटेड एवरेज ऑन सो ऑन द z माइनस z बार का स्क्वायर, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, समेशन इज द वेरिएंस, और उसका रूट करके स्टैंडर्ड डिविएशन। दूसरा जो मेथड है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। उसमें पहला हमने वर्किंग नोट प्रिपेयर किया कि रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो क्या होगा, that is calculated as taking into account the proportion in which the investment is made multiplying with the respective return. Proportion into return is the weighted average return of the portfolio 6.4%. That is what we do. Risk of the portfolio के लिए क्या किया जाएगा, risk of the portfolio के सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि हमको correlation coefficient फाइंड करना है। correlation coefficient जो हम लोग समझते हैं उसका रेंज होता है -1 to +1। -1 is indicating
that said these two factors are having perfect negative relationship. Positive one is indicating perfect positive relationship, 0 is indicating independent, 0 to 1 is positive, negative 1 to 0 is like negative. तो हमने सबसे पहले कोवेरियंस कैलकुलेट किया, उसके ऊपर से कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो दोनों सिक्योरिटीज के रिटर्न का रिलेशनशिप है. उसके बाद से यूजिंग दिस न्यू फॉर्मूला जिसका हमने डेरिवेशन बाद में समझा, वी हैव अंडरस्टूड दैट इज से कैलकुलेटेड द वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो और वेरिएंस का अंडर रूट करके स्टैंडर्ड डेविएशन 6.2082. और देखो मेथड नंबर 1 का भी आंसर वही है 6.2081. That is the way we are supposed to make the calculation of the risk if at all the investment is made in more than one security.